गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड अदर एग्जाम्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। कंडीशंस, तो इसकी सबसे पहली कंडीशन है द कंपाउंड should be planar, it should be planar and cyclic. It should be planar and cyclic. Then the next condition is each member of the ring, it must be sp2 hybridized. मतलब जो भी मेंबर है रिंग का उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp2। कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इज द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इट शुड बी इक्वल टू 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू क्या होगी? यहां पर n की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। किसी कंपाउंड को अगर एरोमेटिक होना है तो उसे ये कंडीशंस फॉलो करनी ही होंगी। अब इसमें क्या है, ये जो लास्ट हमने जो पॉइंट लिखा है, दिस point is separately known as Huckel rule. This point is separately known as Huckel rule. This is very important. So, these are the conditions for a compound to be aromatic. अब इसमें एक ये इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लें कि अगर कोई ओपन चेन कंपाउंड है वो कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो an open chain compound can never be aromatic. An open chain compound can never be aromatic. ओपन चेन कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता है। तो ऐसा कॉमन कंपाउंड जो हम जानते हो एरोमेटिक को, जिसे हम बड़ा यूज करते हैं केमिस्ट्री में, दैट इज बेंजीन। वी नो बेंजीन क्या होता है इसका फॉर्मूला? इट इज C6H6। कितने डबल बॉन्ड इसमें हमें दिखाई देते हैं? 3। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है? 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल को फॉलो कर रहा है। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो ये आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। सो वी विल क्लासिफाई द एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो मेनली हम इन्हें 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन टाइप इज नोन एज बेंजीनॉइड कंपाउंड एंड अनदर क्लासिफिकेशन इज नोन एज नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। ये बेंजीनॉइड कंपाउंड कौन से होते हैं? बेंजीनॉइड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग शुड बी प्रेजेंट। 1 बेंजीन रिंग शुड बी प्रेजेंट। और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड कौन से होंगे? विच डू नॉट कंटेन benzene ring। तो अब इनकी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की।
बेंजीनॉइड कंपाउंड में हम देख सकते हैं वी हैव naphthalene. Naphthalene, this is the formula of naphthalene. How many pi electrons are there? We have 2, 4, 6 and 10 pi electrons. 10 pi electrons. This compound is aromatic. Then we have anthracene. This is the formula of anthracene. So these are the pi electrons in this compound. So how many pi electrons we can see? Here we have 14 pi electron. 14 pi electrons. So this compound is aromatic. Another compound, phenanthrene. This is the formula of phenanthrene. So can you see the pi electrons in this compound? How many pi electrons are there in this compound? We have 14 pi electrons. So this compound is also aromatic. So all these are examples of benzenoid which contain at least one benzene ring. We will see examples of some non-benzenoid compounds. Non-benzenoid compounds. So here we have this compound. What is the name of this compound? Cyclopropynyl cation. Cyclopropynyl cation. How many pi electrons are present? 2 pi electrons. And these pi electrons are delocalized in the ring. So this is aromatic compound. Aromatic and 2 pi electron. Next compound we can write is cyclobutynyl dication. Cyclobutynyl dication. How many pi electrons we can see here? Here we can see that we have 2 pi electrons and these pi electrons are delocalized in the ring. So we have 2 positive charge. So 2 pi electron and this compound is aromatic. Similarly, we can have cyclobutynyl dianion. This compound is also aromatic. So how many pi electrons we can see here? 2, 2 and 2. 6 pi electron. So this compound is also aromatic and these pi electrons are rotated, delocalized in this ring and we have 2 negative charge. So this is also aromatic and we have 6 pi electron. Similarly, we can have this compound. This is cyclopentadienyl anion. Cyclopentadienyl anion. How many pi electrons we can see here? Here we can see that the number of pi electrons are 6 and these pi electrons are delocalized in the ring and 1 negative charge is there. So this compound is aromatic and we have 6 pi electron. Another very important example is this compound is known as troponium ion. So how many pi electrons are there in this compound? The number of pi electrons we can see here is 6 pi electrons and these pi electrons are delocalized in this ring. So this compound is also aromatic. Aromatic and 6 pi electrons. So these are various examples of aromatic compound which are benzenoids and non-benzenoid. Heterocyclic aromatic compounds. Heterocyclic aromatic compounds. So what are heterocyclic aromatic compounds? These are those compounds in which there is some heteroatom present in the ring. Heteroatom means we have
oxygen, nitrogen, sulfur, etc. Such atoms are present in the ring. So what are the examples of such compound? We have this compound. What is the name of this compound? This compound is known as pyridine. Similarly, we can have, what is the name of this compound? This compound is known as pyrrole. Similarly, we can have another compound. What is the name of this compound? This compound is known as furane. We can have another example. This is another such compound. What is the name of this compound? This compound is known as thiophene. So these are some of the examples of heterocyclic aromatic compounds.